Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Alright, welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. We are at Pindi Cricket Stadium, the fourth day of the first cricket test match between Pakistan and England. Pakistan are 497 for the loss of 7 wickets, still trailing by 158 runs with Salman Ali Agha on 10. The only recognized batsman still at the crease. Remember, England scored 4 centuries on the first day and Pakistan made 3 centuries on day 3. Rizwan, Azhar Ali and Saud Shakil should consider themselves unlucky not to complete half centuries or a century, which ideally suited for the batsman. Bazid Khan giving pitch report prior to today's proceeding. Players are warming up. Pakistani players, England players are in the center. आगे समय पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन लगातार तबसरा सुनने के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम चलते हैं जहां हमारे मेहमान हैं अहमद हमाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सामीन। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पहला क्रिकेट टेस्ट मैच, चौथे दिन का खेल। हम मौजूद हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में और आज पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग करके स्कोर 499, 7 खिलाड़ी आउट पे दोबारा शुरू करेगा। और मेरे साथ मौजूद है एजाज। वेलकम टू रेडियो पाकिस्तान कमेंट्री बॉक्स। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी से, जहां पर एक निखरा हुआ दिन है, धूप निकली हुई है, हल्की हल्की फुनकी है हवा में और इस वक्त हवा न होने के बराबर है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो लगभग कोई 13-14 सेंटीग्रेड और उम्मीद भी यही रखी जाती है कि आज पूरा दिन लगभग इसी तरीके से धूप निकलती रहेगी और कल का दिन जो कि आखिरी और 5वां दिन होगा तब भी मौसम साफ सुथरा रहेगा। और जो इम्पोर्टेंट है इस मैच के हवाले से, ये टेस्ट मैच जो कि पहला टेस्ट मैच है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने आई है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। आज चौथा दिन है इस टेस्ट मैच का और मैच जो है थोड़ा शेप अप होना शुरू हुआ है क्योंकि हमने पहले 3 दिन देखा कि बहुत ज़्यादा रन्स बने, 7 सेंचुरीज बन गई। उसके बाद फिर सूरत कुछ ऐसी लग रही थी, क्रिटिक्स भी यही कह रहे थे, जो निखारी है क्रिकेट के वो भी यही कह रहे थे कि माइट भी ये मैच ड्रॉ की तरफ जाए। लेकिन कल की शाम जब सूरज गरूब हुआ तो ये मैच जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी इशारे या फिर कहना चाहिए कि चीज़ें दे गया कि माइट भी जो रिजल्ट है वो इस मैच से आ सके। आज चौथा दिन है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त 158 रन पीछे है इंग्लैंड के कुल मजमूए से। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो पिच है वो यकीनी तौर पर जो ट्रेडिशन इसकी रही है पिछले 3 दिन में कि बैटिंग ट्रैक रहा, लगभग कोई 70-80% वैसा रहेगा, लेकिन एफर्ट डिलीवरीज जो कि पेसर्स अपनी बैट को बेंड करके डेक को हिट करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं हेल्प मौजूद रहेगी। जी हाँ, पाकिस्तान को अभी भी इंग्लैंड की पहली इनिंग का जो स्कोर है, पाकिस्तान को खसारा ख़त्म करने के लिए अभी भी 158 रन की जरूरत है और पाकिस्तान की 3 विकेटें बाकी हैं। कल के पूरे दिन में देखा, जहां पहले दिन टेस्ट मैच के इंग्लैंड ने 4 सेंचुरी स्कोर की, वहाँ पाकिस्तान की जानिब से 3 सेंचुरी स्कोर की गई, जिसमें अब्दुल्ला शफीक 114, इमाम उल हक 121 और बाबर आजम ने 136 रन बनाए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अजहर अली, रिजवान और सऊद शकील बिल्कुल ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने सुनहरी मौका जो है इस इतनी अच्छी बैटिंग पिच पे सेंचुरी बनाने का मिस कर दिया। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि इतना बैटिंग went on the left side, tried to catch it with a single hand but missed it altogether. So good try, but it should have been taken. So the end of the 5th over of England inning, England 36 for 1. Zach Crawley not out 18, Pop not out 15. So there is a change in the commentary booth as well.
I am being joined in by Ahmed Hamad Siddiqui. Welcome Ahmed. बहुत शुक्रिया काशिफ। स्कोर पाकिस्तान का बढ़ता हुआ 36, एक विकेट के नुकसान पे 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और जिस तरह पहली इनिंग में इंग्लैंड का रन स्कोरिंग वो तकरीबन 7 से 8 यही नजर आ रहा है इस इनिंग में भी अब तक। Muhammad Ali going to start the bowling from commentary box and it is going to be Oli Pop. He was shot with delivery by Muhammad Ali up in the air and this time it's gone! This time the seam shot did not make any mistake and ball went straight to the seam shot. It was a trap laid for Oli Pop. Ali Pop is not happy at all. He is hitting his pad with his bat. He is not happy at all because the trap was laid and set by the captain Babar Azam and he was into this trap. It was a short bit delivery and played it towards the seam shot, towards fine leg. An easy catch for the seam shot who did not make any mistakes. So the second wicket of England is down. England 36 for 2 and first wicket of the second inning for Muhammad Ali. जी हाँ, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ऊंची बॉल आई और जैसा कहा जाता है कि शॉर्ट पिच बॉल अगर बॉडी लाइन होगी तो फिर बैट्समैन नेगोशिएट करने में मुश्किल होता है। इंग्लैंड ने हमने देखा कि शॉर्ट पिच बॉल बहुत ज़्यादा की और 3 से 4 फील्डर कैचिंग पोजीशन में रखे, उनको कोई ऐसी विकेट नहीं मिली। लेकिन लग रही वो पाकिस्तान एक और सेंचुरी मेकर जिन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर की थी, ओली पॉप आउट हो गए 15 रन बनाकर और पाकिस्तान ने इस तरह दूसरी विकेट हासिल कर ली। इंग्लैंड की 36 के स्कोर पे 2 विकेटें हासिल कर ली हैं और मजमूई बेहतरी देखी जाए इंग्लैंड की तो अब तक 114 रन की हो गई है। तो हकीकतन इंग्लैंड इस वक्त 114 पे 2 खिलाड़ी के नुकसान। Exactly, and the only difference of Pakistan bowling in the second inning is that we are very much disciplined. We are bowling according to the plan, and this is what was missing in the first inning. They were bowling on both sides of the wicket, which was very easy for the English batsmen to negotiate, and then the captain could not set the field according to the bowling. But this time, as per the plan, as per the instructions from the captain, the bowlers are bowling, and this is exactly what should be done. The England aggression is still on. They are batting at 6.97 at runs per over, but at the same time they are losing wicket. There is slight change in the fielding. Zahid Mahmood is being changed from point to backward point on the boundary. 2 steps for Joe Root. Joe Root is the vice captain of England. He is going to face Muhammad Ali. Inikam ball to Joe Root on the back foot, played it very delicately towards square leg. Azhar Ali is after the ball before he can collect the ball. A single is taken by Joe Root. So he is off the mark on the very first delivery. Crawley is not out on 18. जी हाँ, हमने अपने सामीन से कहा कि आप हमारी ट्रांसमिशन हमारी रनिंग कमेंट्री के हवाले से अपनी राय दे सकते हैं और हमें है आज़ाद जो जम्मू और कश्मीर से वो कहते हैं कि मेरी तरफ से आपको और पूरी टीम को सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत अच्छा है कि हम कमेंट्री सुन रहे हैं। उसके अलावा नजमा है आज़ाद कश्मीर से, ये भी यही कहती है जहाँ कि कमेंट्री स्टार्ट करने पे हम रेडियो पाकिस्तान के मशहूर हैं। डॉक्टर शहजाद अनवर। Muhammad Ali once again. Off he goes, passes the umpire, ball to Zach Crawley on the back foot, played it towards gully where it is fielded by Salman Ali Agha. 1 run added to the total, score moves on to 38 for 2. G. Ahmed. जी हाँ, कुछ और मैसेजेस हैं जिसमें मैंने कहा कि डॉक्टर शहजाद अनवर ये भी इस्लाम कह रहे हैं और कह रहे थे वालिदैन हमारे वालिदैन और बच्चों को मौजूदा हालात के मुताबिक रहना है और चलना है ऑब्वियसली, और हम सब आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और सॉन्ग भी सुनना चाहते हैं। जनाब फिलहाल तो रवा तबसरा जारी है, आप इससे महसूस हो। But thank you very much for all the listeners who are keeping in contact with us through social media. Please stay tuned with us and let us know of your comments, and your comments will be our guideline and we'll be able to serve you much better. Radio Pakistan has resumed commentary after a very long time, and we intend to keep this as a routine practice. And after the English series, it is going to be New Zealand series, then PSL, all will be aired through Radio Pakistan. जी हाँ बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान अपने मीडियम वेव नेटवर्क से आपके लिए रवा तबसरा लेकर आया है। Muhammad Ali bowling from commentary box, and it is going to be Zach Crawley who will be facing him. Next delivery from Muhammad Ali on the leg side. There was a slight appeal from the slip fielder, but
Muhammad Ali and Rizwan, they both were not interested because apparently it was moving away from the leg side. काशिफ भरपूर मैं कह रहा हूँ कि हमारे सामीन ने जो रिस्पॉन्स दिया है अपने मैसेजेस के थ्रू, मुजीब हैं लंडी कोतर से, आरिफ रजी हैं बन्नू से, हबीबुर रहमान मानसरा से, उसके बाद सुलेमान हैं वो मरी से कह रहे हैं कि जी आप कमेंट्री शुरू करने पर हम रेडियो पाकिस्तान के मशहूर हैं. We are also thankful to all our listeners who are with us. We know that this commentary is going throughout Pakistan through different channels. Muhammad Ali once again, this time on the leg side, went on the back foot, played it towards deep fine leg one, and they'll come back for the second. 2 more runs added. Score moves on to 41 after the end of 6 overs. क्रॉली को जल्दी आउट करना होगा पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, रन स्कोरिंग बहुत इनकी तेज़ है. अभी भी आप देख लें कि 22 गेंदों का सामना किया, 21 रन बनाए, 3 चौके हैं और इंग्लैंड का स्कोर 6 ओवर में 41, तकरीबन 7 रन पर ओवर की रफ्तार से इंग्लैंड रन अभी भी बना रहा है. तो पाकिस्तान जिस तरह विकेटें लेता रहेगा शायद कहीं इंग्लैंड के रन स्कोरिंग इस पर कमी नजर आए. But this is going to be a very interesting test match, and I'm sure the spectators, they are also enjoying it. We can see on our right and left all the stands are full, and remember today is Sunday, today is a public holiday, and we are expecting more crowd to get in. All the tickets have been sold out. No ticket is available for this match anymore, but still people are pouring in. It is going to be Naseem Shah, but Joe Root just moved away because Babar Azam was setting the field. He was asking the fine leg to move a bit further, and that's the reason why Joe Root went away. Lack of concentration this time from Joe Root because Babar Azam was changing the field. We've got 2 slips, short mid-wicket where Babar Azam is standing, then mid-on Shan Masood. We've got mid-off Azhar Ali, Imam ul Haq standing at extra cover. Inikam balls to Joe Root, played it towards Imam ul Haq at extra cover, no run. आने के वक्फे से कल अगर पाकिस्तान को 1 विकेट और मिल जाए तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा सेशन होगा ये पाकिस्तान के लिए. अब तक 25. And now you're asking too much because initially you were saying that if Pakistan can take just 1 wicket, it would be very good for Pakistan. Now they have taken 2 wickets. You're asking 1 more? वो कहते हैं ना कि जब आपने ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया तो फिर उसमें क्या. Exactly. But remember, this is the last over before lunch because it is almost 12 o'clock. And if lunch is at 12, then this is going to be the last over before lunch. The next delivery, taking the inside edge. Very close call this time from Joe Root. It is very evident that the English batsmen, they are not playing as freely as they were in the first inning, and they are in a little bit of pressure because if you consider 120 as their total, including the lead, then still Pakistan is doing pretty well, 120 for 2. जी हाँ, पेस के साथ बॉल करें. अगर आप नसीम शाह की आज के दिन दूसरी इनिंग में बॉलिंग देखें तो ऑलमोस्ट 140 kph से बॉल कर रहे हैं और यहाँ लेट हो गए इंग्लैंड के साबिक कैप्टन जो रूट और इनसाइड एज लगा. लकीली फॉर हिम को वो प्लेड ऑन विकेट पे जाके नहीं लगा. For Zach Crawley, we've got 1 slip, which is Abba Salman, Abdullah Shafiq, a gully, short pitch delivery. That was a full toss. Full toss played it towards mid-on. I think that was change of pace, but he could not judge it well, Zach Crawley, and that ball went over the head of Azhar Ali towards the boundary. They managed to take 2 more runs. We'll have to check from the replay whether it was a slow delivery or not. Yes, it was. It was. बहुत शुक्रिया और रेडियो पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया. यहाँ प्रोड्यूसर जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ मौका दिया. मेरा करियर जो शुरू हुआ था वो रेडियो पाकिस्तान से ही आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप से शुरू हुआ था. बड़ी खुशी की बात है. और जहाँ तक पिंडी स्टेडियम की बात है, तो इस साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आई थी वो 24 साल बाद आई, इंग्लैंड 17 साल बाद आई, तो पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद हो रहे हैं. हमारे जो इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे, हमारी जो हुकूमत है, उसने बड़ी कोशिशें की हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी बतदरीज कोशिशें की हैं, जिसकी वजह से अब ये बड़ी टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं. पिंडी हमेशा से फास्ट बॉलिंग पिच रही है. मुझे याद है हमने यहाँ साउथ अफ्रीका का भी टेस्ट मैच 1-1.5 साल पहले कवर किया है, और वो
वो पिच बहुत ही अच्छी थी और वहाँ पर टेस्ट मैच का नतीजा भी बरामद होता है। ऐसी पिचें बनाएं जिससे कम से कम बॉलिंग और बैटिंग को एक मुतवाजन मुकाबला मिले, एक कंपटीशन हो बैटिंग और बॉलिंग का, जिसमें आउट भी हो, जिसमें चौके वगैरह भी लगे, जिसमें सेंचुरियाँ भी बने। लेकिन इस तरह के एक ही दिन में 506 रन बन गए तो बड़ी डेड, बड़ी स्ट्रेट पिच थी। और 16वें ओवर के साथ कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली का वक्त हुआ चाहता है। कमेंट्री बॉक्स में हम जो रिप्लेस करेंगे अहमद हमाद सलीम। बहुत शुक्रिया ओवर हाशमी साहब को हम वेलकम करेंगे अपने कमेंट्री बॉक्स में। और हाशमी साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि मिशन ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की और ड्रॉप इन पिचेस के कॉन्सेप्ट भी रबी आजम ने डिस्कस किए, तो कितना बेनिफिट होगा कि अगर हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में ड्रॉप इन पिचेस लेकर आए। मोहम्मद अली बॉल करेंगे जो रूट को आए गेंद की शॉर्ट पिच बॉल और आसानी इसको पुल कर दिया स्क्वेयर की जानिब। 1 रन, इंग्लैंड का स्कोर बढ़ता हुआ 108, 3 विकेटों के नुकसान पर। मजमूई बर्तरी इंग्लैंड की 186 रन। बहुत मुश्किल और बहुत एक नया आइडिया है ज़रूर, लेकिन बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना। रमीज़ तकरीबन 1 साल से इसकी कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कॉस्टली बहुत है, इसलिए कि अगर आप वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से मट्टी लाकर यहाँ ड्रॉप इन पिचेस भी बनाएंगे तो वो इन्वायरमेंट, वो माहौल देने के लिए आपको हज़ारों डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं हज़ारों डॉलर्स? है तो ज़रूर, लेकिन ये एक ऐसा आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट करने के बजाय हम कंडीशंस रेप्लिकेट नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया की। हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टीमें ऑस्ट्रेलिया भेजनी चाहिए, अंडर 15, अंडर 19 और 18 में। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और इस बॉल को हैरी ब्रुक ने मिड विकेट की जानिब खेला, 1 रन का और इजाफा। देखिए, हमारी तरह बिल्कुल इंडिया भी नहीं जीतती थी ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने ए सीरीज़ खेली पिछले 9 साल। उन्होंने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने ए सीरीज़ खेली, ट्राई सीरीज़ वो खेलते थे। 1 साल साउथ अफ्रीका में होती थी, 1 साल इंडिया में, 1 साल ऑस्ट्रेलिया में। तो उनकी 5 टीमें गुज़िश्ता 15 साल में, ए टीमें इंडिया की ऑस्ट्रेलिया जा चुकी हैं। उन्होंने 2018 में और 2021 में 2 सीरीज़ अब ऑस्ट्रेलिया में जीत ली। जनूबी अफ्रीका दुनिया की वो वाहिद टीम है जिसने पिछले 3 टूर पर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त दी है। और मोहम्मद अली के इस बॉल को बैकफुट पे जाते हुए गली की जानिब खेला, शान मसूद फील्डर थे, कोई रन नहीं बना। शायद साहब, आपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी अटेंड की और आपके सवाल बड़े मानी खेज। आपने सकलैन से भी पूछा, आपने बाकी खिलाड़ियों से भी पूछा, और वो एक सवाल कि फास्ट बॉलर जो क्यू में लगे हुए हैं, स्पिनर जो क्यू में लगे हुए हैं, तो हम उनको नहीं मौका दिया जिन्होंने इनसे ज़्यादा विकेट लिया। क्या ये जस्टिफाई करता है जवाब? नहीं, इतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करता। सकलैन अजीब व गरीब जवाब देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो कोचिंग मटेरियल है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ देखना पड़ेगा। और उनको भी सकलैन स्पिन बॉलिंग कोच हैं, उन्हें भी अपनी सलाहियतों को और बोलने का जो उनका अंदाज़ है उसको चेंज करना पड़ेगा। ड्राइव कर दिया कवर्स की जानिब जो रूट ने 2 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 111, 3 विकेटों के नुकसान पर। नेल्सन ऑन द बोर्ड। और कुछ मैसेजेस हैं जो हमारे सामीन, जो हमारे लिसनर्स हैं, वो हमें गाय बगाए भेज रहे हैं। जावेद अहमद ये फरमा रहे कि आप कमेंट्री शुरू की, बहुत शुक्रिया। उस्मान अब सूरत ये कौन सी जगह है? इसके अलावा सलाउद्दीन खटक है करक से, और एम इकबाल है। ये तमाम लोग कह रहे हैं रेडियो पाकिस्तान की जानिब से कमेंट्री के आगाज़ पे दोबारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं मैनेजमेंट का। मोहम्मद अली के इस बॉल को गाइड करना चाहते थे 3rd मैन की जानिब, लेकिन गाइड ज़रूर किया, विकेट कीपर तक बॉल गई, कोई रन नहीं बना। 111, 3 विकेटों के नुकसान। बहुत अच्छा कदम है रेडियो पाकिस्तान का और हुकूमत पाकिस्तान का, हमारी वजारत इत्तलात की जो मिनिस्ट्री है उसका, कि ये रेडियो की कमेंट्री दोबारा शुरू की। बहुत से लोग जो टेलीविज़न पर बैठकर नहीं देख सकते, सफ़र में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो उनको रेडियो कान से लगाकर सुनना, तो ये साल साल से पाकिस्तान की रिवायत रही है। पूरी दुनिया में भी बड़ी रिवायत रही है। जिस भी क्रिकेट खेलने वाले मुल्क आप जाएँ तो रेडियो कमेंट्री बहुत ही एक अहम किरदार अदा करती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं तो चूँकि रेडियो से ही मैंने अपने करियर का आगाज़ किया है, तो मेरे लिए समझें ऐसा है जैसे मैंने 4 रसगुल्ले खा लिए। क्या ज़बरदस्त आपने इसकी तशबीह दी है। और हाशमी साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप क्योंकि रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और आपने वो आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप जो कि पायनियर की हैसियत रखता है स्पोर्ट्स शोज़ के हवाले से, जाहिद महमूद आए बॉल की। Really pleased to be here. I saw the big sign up outside the door. But yes, Radio Pakistan is also doing this. So we're from the BBC, we're doing it 2 doors down from you, getting back to the UK. So it's been a long time since I was on this ground. I was here, I think, in 1996 for the World Cup. All right. And we drove down from Peshawar for a
a World Cup game here. I can't remember which one it was now. But I haven't been back to Pakistan obviously for 17 years, since 2005. So it's been a long time. It's lovely to be back, and I know me and all my colleagues, the BBC and the media upstairs, we really are being very well looked after. We're very happy to be here. It's just good to be back. Good to hear that, and I'm sure you're enjoying the hospitality of Pakistan and the atmosphere that has been developed because of the English team. And in 2005, I also remember that there were 3 test series between England and Pakistan. Pakistan won that series. You beat us in the last game, certainly, I remember. Yeah. 1 inning and around 100 runs in the last inning. In the last test match. You've invited me in here to tease me. Not at all, not at all. We are so happy to have you all here. We are so excited, so happy to have the English team here. And now it is a complete revival of Test cricket in Pakistan. The next ball has been played right out of the park this time. Towards long on. A full-blooded shot by Harry Brooks. 6 more runs to England, 6 more runs to Harry Brooks. England moves to 224 for the loss of 5 wickets, and the lead now is up to 302 runs. What do you think about the match? The match is becoming very exciting. Well, it is, and you know what interests us is that we have never seen Ben Stokes in this situation as far as the declaration is concerned. We hear lots of talk about we don't bother with draws, we're not interested in draws, we just want results. If we lose, they say. Yeah. The next delivery played it towards extra cover. So it would be interesting to see what happens, because this is not enough runs. 302, that's not enough yet. Surely, first test match of a series, but then Ben Stokes and McCullum don't think like that. The next ball came down the wicket, played it towards extra cover, vacant extra cover boundary, another 4 runs. Beautiful shot by Harry Brooks. Naseem Shah. England 264 for 7. England lead by 342 runs. I said, why slow to come in? Because saying yesterday, big crowd in the afternoon, obviously Bubba batting. He said, oh, we Pakistanis, we like to sleep until maybe 11 o'clock, he said, and then we have a nice breakfast with some friends. And that's why we come in a little later on. There's a terrific crowd now. I mean, they've been very much rewarded. I'm Jonathan Agnew, and you're listening to Pakistan's first FM sports channel, Sports FM 94, brought to you by Radio Pakistan. There we go. It's a pleasure being on. So you're going to be in Multan? I'll be in I want that recipe. I'm going to go back home. I'm going to say, right, to my friends. But you'll get this recipe, but for that recipe you'll have to come back to Radio Pakistan again. Well, I will come back. Either that or I'll beat the chef up at the hotel and find out. Thank you very much. No, Thank you very much for coming all the way to Pakistan. We are really grateful. We are really excited for having you back in Pakistan after 17 long years. Well, I'm about to tell a very short story. The last time I was with Radio Pakistan, we were in Calcutta in 1996. It was the semi-final of the World Cup. It was Sri Lanka versus India. Okay. I had to set up the commentary box. My producer was in Chandigarh for the other semi-final. Got there, got to the box, set it all up, and the Radio Pakistan people arrived. And they said, I think this is our box. I said, no. I quickly wrote BBC and stuck it on the door. I said, no. I think it's a space outside. I said, you'll be fine. There'll be no trouble. So out they went. And when the riot started, I felt a bit sorry for them. Bottles were raining down. Remember, India lost the game? It ended in a riot. And poor old Radio Pakistan is sitting outside with their arms over their heads. I felt very guilty. So if you are one of those Radio Pakistan people, can I officially apologise? No for having need to do stolen that. your box. No need to do sending that. it out into the riot in Eden Gardens that day. But look at the Pakistan people. We are so friendly. I know. We are so hospitable. Always. It's lovely to be here. I want that recipe in Multan. We will. And thank you very much. Thank you once again. And this was Jonathan. England is back in Pakistan to play the 3-test series. It's a test championship which is going on, and England is at number 7, but Pakistan is at number 5. So Pakistan still has the opportunity of qualifying for the World Cup, for the test championship final, which will be played in Lords next year. What do you have to say about it? Well, I think Pakistan played very well. I think the batting of
Pakistan have got a lot of seamers, and England tends to be quite seamer friendly as well. Yeah, and the T20 international, England just won in Australia. England played really well, and Pakistan and England, they both were the finalists. So the finalists are playing again the Test series. Yeah, they are. Well, I'm sure England fans will be hoping it turns out the same, and Pakistan fans the opposite. And what about Mark Wood? Is he coming for the next Test match in Multan? Because today we saw in the lunch break session that he was practicing, he was bowling. So I'm sure he's fit now for the next Test match. Any reports about it? I think they were hoping he would be fit for the next Test match. It would be great for England to have that other dimension. Obviously, using Stokes as a third seamer is especially ideal, and the injury we've seen to Liam Livingstone as well. So I'm hoping he will be fit, but he's only just come back from such a big injury. I don't know if he'll need a bit more time maybe. And And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.